Okay. Hello everyone once again. So कोई doubts करने हैं पहले? Doubts. Friday class is for doubts and practice, but अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम तक हम पढ़ लेते हैं. So ask your doubts over here quickly, and then we'll start new chapter. Next, we have to do ferromagnetism. Yes. Ferromagnetism रह गया था. We did last class up to diamagnetism. ठीक है. Diamagnetic substances कर लिए थे हमने. Diamagnetic substances are those which have all the electrons paired and which the magnetization opposite to the external field. तो 11th में ना, you are in 11th ना? Yes sir. अभी तुम्हारा तो क्लास होगी 5:30 नहीं 7 o'clock. नहीं 7 o'clock आए थे ना तो. तो फिर भी जल्दी पता पड़ गया. एक बार तो एक महीने तक बच्चा पढ़ता ही रहा था. 1 month he was in class 11th and he was in class 12th. That's for a month. Very nice. Diamagnetic substances जिनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइजेशन होता है और क्यों ऐसा होता है? ऑफ बीइंग पेयर्ड. पेयर में एक डायपोल की एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दे बोथ विल cancel out each other. Right? Next, third is ferromagnetic substance. Ferromagnetic substances are those which are very, very strongly magnetized. Ferromagnetic substance. थोड़ा हम पढ़ाई कर लेते हैं because ये वाले topics last topic है इस particular chapter का, and then at the end we will have the doubt session. Ferromagnetic substances, the substances which are very strongly magnetized. Very strongly means हमने external field लगाई 1 Tesla and it makes the total field 100 Tesla. External field is 1 Tesla, it will magnetize. Symmetrical हो गया कुछ. Right, so ferromagnetic substances कुछ special group 18 elements iron, cobalt, nickel and their alloys. इनमें कुछ ऐसी property होती है that because of being a specific geometry of these particular material, they are very, very, very strongly magnetized. Particular geometry means crystal structure. इन सब के कुछ body centered, face centered, इस टाइप के कुछ atoms जो होंगे, those will have electrons. They already have so many electrons क्योंकि D block में पढ़ा होगा आपने. Excitation के बाद कुछ number of unpaired electrons बहुत सारे हो जाते हैं. Iron का configuration, iron का electronic configuration, he is iron also. Don't worry. Yes, 3d6 4s2. आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या होता है? वेरी नाइस. 3d6 4s2. 3d6 4s2 और जब इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है d6 चेंज होता है d5 में बिकॉज हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल. d5 और s2 का s1. तो टोटल 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आयरन में.
5 डी का, एक एस का, और जो एक्साइड होते हैं वो 2 पी में पहुंच जाते हैं। समझ गए? ऑलरेडी दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ऑलरेडी बहुत सारी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, बट उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सेम डायरेक्शन में ऑलरेडी ओरिएंटेड है। दोज ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव ऑलरेडी सेम डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स 10 टू द पावर 6 से लेके 10 टू द पावर 16 तक के नंबर ऑफ एटम्स, दे आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। डोमेन इज कलेक्शन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। लिखो हेडिंग डोमेन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। स्ट्रेंज मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाइड, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। पैरामैग्नेटिक थोड़ी बहुत एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इंक्रीजेस 100 times, 1000 times or so. Ferromagnetic substances, iron, cobalt, nickel, and their alloys. So they have domain. Domain is the group of atoms. ब्रैकेट में 10 to the power 9 to 10 to the power 11 और भी हो सकते हैं। Atoms collectively they make a domain. Domain is the group of atoms having same direction of magnetic. Yes. So group of atoms which have same direction of dipole moment, ये कुछ दूसरे group of atoms हैं। Why they have some other orientation? Because they might be in some other position of the crystal. So already they have a very high, one domain also have a very high dipole moment. This arrow is of dipole moment direction. So they will be added. But जब तक हम बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाते, the domains are randomly oriented so that the net dipole moment is 0. Arun, तुम दूसरे रूम में चले जाओ करके। ठीक, अच्छा तुम तो पेपर दे रहे होगे ना? The dipole moments which are in the same direction, those group of atoms are called domains. और domains बहुत सारे होंगे, but again the domains are randomly oriented such that their net dipole moment is always 0. इनकी डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, that is not necessarily fixed. Aryan, why there are domains only in these particular atoms? Why not in other material? Why not in any other material? Why only this? Because atomic dipole, क्योंकि उसमें already बहुत सारे unpaired electrons हैं, and the specific geometry, crystal geometry is same for all these three because they belong to the same group. Sir? Yes. तो आपने 10⁹ to 10⁻11 के लिखा है, क्या ये? एक डोमेन में नंबर ऑफ एटम्स। ओके। ये कितने एटम्स होंगे? दिस इज द साइज ऑफ डोमेन अप्रोक्सीमेटली of the order of 10 to the power 9 to 10 to the power 11. In absence of external electric field, right? In absence of external electric field, domains are randomly oriented so that net dipole moment is 0. In absence of external magnetic field, the domains are randomly oriented so that net magnetic dipole moment is 0. तो बेसिकली ये है वैसे ही कुछ, बट इसमें एक सिंगल एटम की जगह पे बहुत सारे एटम्स का डाइपोल मोमेंट ऐड हो गया, बट अगेन दिस रैंडमली ओरिएंटेड रिजल्टेड इज 0. When external field is applied, when external field is applied, तो जितने भी ये डोमेन्स थे जो किसी और डायरेक्शन में थे, वो भी अपने को रोटेट करके
they also tend to come in the same direction as the external field to gain the stability. इसको वैसा बोलते हैं when external magnetic field is applied, the domain having magnetic dipole moment in the direction of external field increases in size. मतलब ऐसे बहुत सारे इनमें से कुछ ऐसा भी होगा जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होगा, बाकी सारे रोटेट करके इसके डायरेक्शन में आ जाएंगे. सो उस डोमेन का साइज बढ़ जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑलरेडी ओरिएंटेड था. बाकी भी होंगे बट रिलेटिवली वेरी लेस इन नंबर. So on almost the whole volume or whole material is magnetized in the same direction. बाकी जो थे उनका साइज छोटा होता जाएगा और जो सेम डायरेक्शन में है उनका साइज बड़ा हो जाएगा. There will be also the other dipoles, वो खत्म नहीं होंगे but their size will be almost negligible. Right? Domains कैसे होते हैं? दो तरह से, एक तो रोटेट होके और दूसरा न्यू डोमेन्स also being formed by displacement of boundaries of domain and by rotation of domain. क्या कुछ लिखा था आगे? लिखो when external magnetic field is applied, when external magnetic field is applied, all the domains align in the direction of external field either by rotating, either by So can you repeat? the domain size align themselves either by rotation, or displacement of medium boundary. Displacement of medium boundary. Displacement of boundaries of domain. Medium मतलब displacement of boundaries. एक डोमेन से दूसरे डोमेन को सेपरेट करने जो बाउंड्री वो आगे मूव कर जाती है और बाकी जो डोमेन्स अलग डायरेक्शन में थे वो रोटेट होकर सेम डायरेक्शन में, which results into very strong magnetization, and magnetic field is magnetic field is increased many times. External field 1 Tesla, ferromagnetic substance, it can make the field even up to 100 Tesla if you are using soft iron or any ferromagnetic material. Right? Paramagnetic थोड़ी बहुत 1 को 1.1 टाइप्स करता है and ferromagnetic can increase very 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 strong. So reason क्या है? डोमेन बहुत सारे already है 10 to the power 11. So ऐसे 10 to the power 11 11 11 सारे बन जाएंगे. It will be a very huge magnetic dipole will be formed. Right? बहुत टाइम तक इसको अगर मैग्नेट फील्ड में रखते हैं तो खुद ही मैग्नेट बन जाता है. इट बिकम सो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कि इसको वापस डीमैग्नेटाइज करना पॉसिबल नहीं है. मैग्नेट कैसे बनता है? परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है? एक तो आयरन जो ओर है दैट इज वन, दूसरा स्टील को अर्थ के अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करके महीने भर के लिए छोड़ दो. अर्थ में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अर्थ के अंदर ले जाके इफ यू कीप इट फॉर अ मंथ it will become a magnet. It will acquire a magnetic property because it is a ferromagnetic substance वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को absorb कर करके it becomes almost like a permanent magnet. समझ गए?
राइट, तो दैट्स द सेम रीजन, बिकॉज के अंदर जितने भी डोमेन्स है, और एक बार डोमेन्स बन गए तो उनको ब्रेक करना उतना इजीली पॉसिबल नहीं है. इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दे ऑल वर फ्री इंडिविजुअल, उनको हम रैंडमाइज कर सकते हैं बाय हीटिंग, बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस will not break the domain as easily as paramagnetic substance. Right? Okay. Properties of paramagnetic properties of ferromagnetic substance. Properties of ferromagnetic substance. केमिस्ट्री में थोड़ा और अंदर भी इसका क्लासिफिकेशन है, फेरी, फेरो, एंटी फेरो, पढ़ा है नहीं? डी ब्लॉक अभी नहीं, बट वो केमिस्ट्री में कुछ थोड़ा अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इनके स्पिन के हिसाब से. फिजिक्स में उसका कोई बाय द वे रोल नहीं है. फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी पहला, फर्स्ट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हैं? विच आर वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड. वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, एंड इफ यू पुट अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर कर लेता है, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड. Usually if you put a soft iron or iron, all the magnetic field lines will pass through it. Almost all of the magnetic field lines will pass through it. When placed in external magnetic field, almost, or magnetic field is, ठीक है, diagram से clear है, it develops a very strong magnetic field and almost all the magnetic field lines passes through inside of ferromagnetic material. हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे करते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? किसी भी चीज को अगर इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक चार्ज से या फील्ड से बचाना हो, उसको मेटल के अंदर कैविटी में रख देते हैं, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी. सिमिलरली किसी को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना हो तो उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बॉक्स के अंदर रख देते हैं, बिकॉज जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फेरोमैग्नेटिक के अंदर आ जाएगी. देयर विल नॉट बी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड और वेरी, राइट, सो दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक शील्डिंग. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, in non-uniform magnetic field, ferromagnetic substance always move towards a strong magnetic field region. Ferromagnetic substance move towards a strong magnetic field region. So paramagnetic के जैसी property है, but 1000 times magnified. Means it will be having a very strong magnetic field. It will increase magnetic field by a large amount, and it will move towards the stronger part of the field. So for ferromagnetic substance, its susceptibility is very, very large. For ferromagnetic substance, relative permeability will also be very, very large. Mu will be very, very large as compared to mu naught. So B will again be very, very large as compared to B naught. External field जितनी लगाई हमने उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी total magnetic field because of the magnetization of that material. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर हम किसी रीजन में रख देते हैं तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्विकली अलाइन कर जाएगा. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स. ये जो म्यू आर है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 3000 के ऑर्डर की होती है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इट इज ऑर्डर ऑफ 1.5 1.2. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, next property is that on increasing temperature, this susceptibility of ferromagnetic substance decreases
वो तो सिंपल है, पैरामैग्नेटिक में भी ऐसे ही था कुछ. The susceptibility of ferromagnetic substance decreases and at a certain temperature domain formation breaks. At a certain temperature domain formation breaks, called as Curie temperature. At certain temperature the domain formation breaks, called as Curie temperature or Curie point, above which ferromagnetic substance behaves as paramagnetic, क्योंकि डोमेन ही डिफरेंस था दोनों में. At a certain temperature topic wise analysis अभी कर डालो. Yes, on increasing temperature, at a certain temperature the domain formation breaks, called as Curie temperature, above which ferromagnetic substance behaves as paramagnetic. So ये next property थी, susceptibility of any ferromagnetic substance decreases rapidly with increase in temperature. Initially जब तक वो ferromagnetic है तब तक धीरे धीरे होगा. This is the temperature at which it will be changing to paramagnetic behavior. Paramagnetic substance में temperature बढ़ाने पे susceptibility decrease होती है inversely proportional. So beyond this it will be like a rectangular hyperbola. For any ferromagnetic substance, when temperature is greater than Curie temperature, susceptibility is inversely proportional to temperature rise above the Curie temperature. इसके बाद behavior is paramagnetic. This is called Curie-Weiss law. Chi is equal to C divided by T minus Tc. This is Curie-Weiss law. Paramagnetic substance में it was directly inversely proportional to temperature, and in ferromagnetic substance it will be inversely proportional to the temperature rise above the Curie temperature, क्योंकि Curie temperature के बाद ही इसमें paramagnetic behavior है. Susceptibility decrease तो starting से हो रही है, but only after the Curie temperature it will be behaving like a paramagnetic substance, right? Paramagnetic substance मतलब suddenly a very large dip. पहले बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन था, and at this temperature there is a sharp change in the magnetization or magnetic field inside the material. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Next property clear? Next property of ferromagnetic substance. The ferromagnetic substance retains magnetic behavior even after the ferromagnetic substance retains magnetic behavior or magnetism even after external field is removed. Even after external field is removed. ये तो समझ गया होगा. आयरन को कुछ देर तक मैग्नेट के साथ रखते हैं, मैग्नेट हटाने के बाद ही वो थोड़ी देर तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, थोड़ी देर तक वो आयरन भी दूसरे आयरन को अट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ferromagnetic substance exhibits saturation. Ferromagnetic substance exhibits saturation beyond a certain point. On increasing the external magnetic field property. On increasing the external field, the net magnetic field does not change. So ये repeat कर दो एक बार point.
Ferromagnetic material exhibits saturation property beyond a certain point. On increasing external field, the net magnetic field does not change. Next property, the magnetic field. The magnetic field developed in ferromagnetic substance also depends upon its previous state. Also depends upon its previous state. क्या मतलब हुआ इसका? वो अगर आयरन पहले से किसी मैग्नेटिक कांटेक्ट में रहा होगा, ऑलरेडी इट इज इन मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी. एंड इफ इट वाज इनिशियली अनमैग्नेटाइज्ड, नॉन मैग्नेटाइज्ड, देन इट विल हैव डिफरेंट वैल्यू. सो कितनी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होगी? सपोज हमने 1 टेस्ला की एक्सटर्नल फील्ड लगाई, वी कैन नॉट बी सर्टेन जब तक कि हमें उसकी हिस्ट्री ना बताओ कि उसके पहले की स्टेट क्या है. बिफोर applying the magnetic field, what is the state of that ferromagnetic substance? इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस, हिस्ट्री रिलेटेड. हिस्टेरेसिस का मतलब होता है रिलेटेड टू द हिस्ट्री. सो किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की हिस्ट्री पता होनी चाहिए एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड गोइंग टू हैपन? सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? आयरन. इसके लिए हम ये BH कर्व प्लॉट करते हैं टू अंडरस्टैंड ऑल दीज लास्ट 3 पॉइंट. सैचुरेशन प्रॉपर्टी, हिस्टेरेसिस, हिस्ट्री पर कैसे डिपेंड करता है, एंड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन. सो दिस इज अ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड ही क्यों लिया? बिकॉज सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दैट वी विल बी यूजिंग एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट विल बी इजी टू चेंज दैट मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग द current. So when current passed into the loop is changed, इसके अंदर की जो magnetic field है that will also change accordingly. So we can change in direction as well as magnitude. Right? Solenoid के अंदर ये जो rod रखी हुई है that is a iron rod which is like a ferromagnetic substance, जिसके अंदर की magnetic field हमें plot करनी है with the help of this graph. External magnetic field is the magnetic field produced by this solenoid, which is B naught. External magnetic field को हम किसके टर्म्स में लिखते थे? In terms of magnetic intensity, and magnetic intensity is defined as external magnetic field divided by mu naught. अगर याद नहीं हो तो आप लास्ट क्लास के लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो. This is magnetic intensity of external field. Right? This is a solenoid. Solenoid में number of turns per unit length is small n and current passed is I. Magnetic field का formula क्या होता है? Inside a solenoid, magnetic field, capital I, small n, capital N, small n. So mu naught into small n times I divided by mu naught. Mu naught gone. So H is small n into I. H की unit एम्पियर पर मीटर. तो हम अगर ये बाहर से करंट चेंज करते जा रहे हैं तो हम H चेंज कर रहे हैं, एंड इफेक्टिवली द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड वी हैव टू प्लॉट इन द ग्राफ. व्हेन देयर इज नो करंट, सपोज इट इज इनिशियली नॉट अ मैग्नेटाइज्ड वन, अनमैग्नेटाइज्ड कोई आयरन कोर है, व्हेन वी पास करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड. When the current is increased, I, because formula क्या था? B is equal to mu times H. Mu is equal to mu naught times mu r. Mu r is 1 plus chi into H. हम H इंक्रीज कर रहे हैं तो B इंक्रीज होगा. ठीक है, H इंक्रीज कर रहे हैं तो B इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद ये इंक्रीज होना बंद हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जितने भी डोमेन्स थे सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं. ऑल द डोमेन्स आर 100% अलाइन. उसके बाद आप कितनी भी फील्ड बढ़ाते जाओगे जब बचे ही नहीं डोमेन, so it will not have any further increase. That is the saturation effect.
at a certain value of magnetic field, all the domains are 100% aligned. When it is 100% aligned, there will not be any further change. Obviously. So ये बस एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं. Now starting from 0, suppose हमने करंट को इंक्रीज किया अप टू 10 एम्पियर, 0 1 2 3 4 10 एम्पियर के बाद on increasing the current, the magnetic field does not increase because it has all the domains are aligned and now it gets saturated. अब हम करंट को 10 से रिड्यूस कर रहे हैं, 10 to 9 8 7, फिर से करंट को डिक्रीज कर रहे हैं. Now the path followed by the magnetic field will be different. मतलब अगर 10 एम्पियर पे 100 टेस्ला थी, 9 एम्पियर पे 80 टेस्ला, वापस 9 लोगे तो वो 80 की जगह पे 85, means it is having relatively more magnetic field at each of those corresponding value. क्यों? क्योंकि अभी इसकी हिस्ट्री चेंज हो गई है. The first graph was starting with no magnetization, zero magnetization. अभी क्योंकि already magnetized है, so when we reduce the current to same value, the magnetic field associated will be slightly greater. Means पहले अगर 1 एम्पियर पे it has 20 टेस्ला, now 1 एम्पियर it may have 25 or 30 टेस्ला. Same value of current, same value of intensity, now it will have relatively more magnetic field. इसने पहले से मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा अपने अंदर स्टोर कर लिया है या रिटेन कर लिया. When external current is made zero, intensity is zero, so ideally it should have been demagnetized, but it will retain some magnetic field inside it. और ये जो लेंथ है OA, this OA is called retentivity of this material. एक्सटर्नल फील्ड को हटाने पर भी वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर रिटेन करके रखता है, that length represent retentivity of the material or remnants of a material. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने खत्म कर दी, करंट इज जीरो, थोड़ी देर तक मैग्नेटाइज किया, करंट गायब, स्टिल दिस इज शोइंग मैग्नेटिक बिहेवियर बिकॉज इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक आ चुकी है परमानेंट के लिए. सो दैट इज व्हाई इट इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट फॉर सम ड्यूरेशन. ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें खत्म करनी मीन्स इसको वापस फिर से डीमैग्नेटाइज करना है, आयरन बनाना है, फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस फील्ड में मैग्नेटाइज हो चुका उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाहर से फील्ड लगानी पड़ेगी. इसलिए हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे. करंट अपोजिट, सो H पहले पॉजिटिव था, नाउ H विल बिकम नेगेटिव. मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड ये पहले से अपोजिट हो गई. एट अ सर्टेन नेगेटिव इंटेंसिटी द मैग्नेटिक फील्ड इज कंप्लीटली made zero, means it is now completely demagnetized. पहले मैग्नेटाइज हुई, सैचुरेट, वापस ला रहे हैं, इट डज नॉट फॉलो द सेम पाथ, ये पहले से थोड़ी सी ज्यादा अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी स्टेप, कंप्लीटली गॉन एक्सटर्नल फील्ड, फिर भी इसने मैग्नेटिक फील्ड बचा ली. उस मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने अब रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाई. सो दिस नेगेटिव वैल्यू माइनस ऑफ HC, दिस नेगेटिव वैल्यू करेस्पॉन्ड्स coercivity. So ये जो लेंथ है O to C, this length is called coercivity of the material. Coercivity is the magnetic intensity which demagnetizes the material. जो हम नॉर्मली मैग्नेटिक किसी भी आयरन को थोड़ी देर के लिए अगर सोलेनॉइड के पास या मैग्नेट के पास रखते हैं, वो थोड़ी देर में क्यों डीमैग्नेटाइज हो जाता है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. कोई और मैग्नेटिक फील्ड लगाया या ना लगाया, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो उसके अंदर जो भी मैग्नेटाइजेशन हुआ था वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. It gets completely demagnetized because of the earth magnetic field in opposite direction. अब same process मतलब हम opposite direction में current increase कर रहे हैं. Opposite direction में current increase करेंगे तो opposite direction में increase होता जाएगा, but it will get saturated again. मतलब ये smooth कर रहे हैं, it will get saturated again in the opposite direction. Negative में current बढ़ा रहे हैं, negative में magnetic field बढ़ रही है, it will become saturated again. फिर करंट को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में करते जाएंगे, इट विल रिटेन सम मोर मैग्नेटिक फील्ड, ये फिर से रिटेंटिविटी, ऐसे हर बार सैचुरेशन वाले लेवल तक जाएगा, बट एवरी टाइम दिस इज कॉल्ड वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन. स्टार्ट हुआ था O से, अगर उसके पास पहले से कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है तो इट गेट्स मैग्नेटाइज, सैचुरेट, करंट कम करते जा रहे हैं, फिर भी इसने फील्ड अपने अंदर थोड़ी रिटेन कर ली. अपोजिट डायरेक्शन, एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाएंगे, देन इट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड अगेन,
एट दिस वैल्यू ऑफ कोर्सिविटी। HC हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, हमें उस टर्म का अभी कोई जरूरत नहीं है। OC लेंथ रिप्रेजेंट कोर्सिविटी, OA लेंथ रिटेंटिविटी ऑफ दैट मटेरियल। अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड, फिर अपोजिट में मैग्नेटाइज होकर सैचुरेट हो जाएगा। देन अगेन इफ वी डिक्रीज द करंट इट विल हैव रिलेटिवली मोर मैग्नेटिक फील्ड देन द प्रीवियस वैल्यू। तब फिर से मैग्नेटिक फील्ड जब खत्म कर दी एक्सटर्नल की, स्टिल इट हैज रिटेन्ड सम मैग्नेटिक फील्ड। एंड लाइकवाइज अब अगर फिर से सपोज हम एक और स्टेप फिर से मैग्नेटाइज करें, तो ऑन द सेम करंट ऑन द सेम आयरन रॉड फिर से हमने करंट पास की, तो क्या होगा? इट विल, सैचुरेशन वाली तो मैक्सिमम फिक्स है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। बट अगर इसने पहले 20 टेस्ला थी, अभी 22 24 ऐसे करके एट एवरी साइज एट एवरी साइकिल द साइज ऑफ दिस लूप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ऐसे करते 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 जो रिटेंटिविटी है वो बढ़ती जाएगी। अगर आप इसको बहुत टाइम के लिए मैग्नेटिक, ये खुद ही एक परमानेंट मैग्नेट टाइप बन जाएगा। The size of this loop will be increasing with each cycle of magnetization and demagnetization, क्योंकि वो हिस्ट्री पर डिपेंड करता है उसकी पहले स्टेट क्या था। राइट, समझ आ रहा है? ओके, सो ये जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें साइकिल, वो इन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इससे पहले मैग्नेटाइज कर रहे थे, डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, तो हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगानी पड़ी, तब जाके डीमैग्नेटाइज हुआ। दिस एनर्जी इज काइंड ऑफ लॉस ही होगी। फिर से उसको इनिशियल स्टेट में लाने के लिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में इतनी फील्ड लगाई जिसका हमें कोई मैग्नेटाइजेशन में इफेक्ट नहीं मिल रहा है। राइट, so every time this some amount of energy will be wasted to overcome the retentivity or overcome the remaining magnetic field। मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी लॉस होती है हीट के फॉर्म में, हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल is directly proportional to the area of this BH loop। This area represent heat loss in a cycle of magnetization and demagnetization during the of this ferromagnetic substance। जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे, more and more energy loss will be there because of the size increasing with current। बना लो ग्राफ इस पे। क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बहुत सारे, न्यूमेरिकल भी हैं, बट न्यूमेरिकल्स आर रिलेटिवली लेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो आपको ग्राफ एग्जाम में लाना होगा बस वो रेड कलर वाला, दैट इज वन साइकिल। डॉटेड पोर्शन इज शोन कि अगर हम फिर से और इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इफ अगेन द सेम स्टेप इज रिपीटेड, करंट पास की सोलेनॉइड में एंड इट विल बी इंक्रीजिंग। सो सैचुरेशन से ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी साइकिल में नहीं होगी, बट द रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। again, yes boss, understood।
इन अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन जो लॉस होता है दैट लॉस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। का एरिया क्या होगा काइंड ऑफ बी इंटू एच, इट इज प्रोपोर्शनल टू बी इंटू एच एंड एच इज बी नॉट बाई म्यू नॉट, सो इट इज बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। इसके प्रोपोर्शनल है वैसे एरिया। y axis y into dx, that is the area, so it will be b square by mu naught. Okay, so the different ferromagnetic substances are used as per their application. या तो हमें परमानेंट मैग्नेट चाहिए या फिर हमें टेम्पररी मैग्नेट चाहिए। परमानेंट मैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी शुड बी हाई। एक बार बना दिया मैग्नेट देन इट शुड नॉट लूज इट्स रिटेंटिविटी, इट्स मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज करते हैं स्टील और हार्ड आयरन। स्टील कैसे बनता है, आयरन को स्टील में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लाइक व्हाट्स कार्बन डाल के, राइट, आयरन प्लस कार्बन इज स्टील, सो स्टील बिकम्स हार्ड। जो आयरन होता है दैट इज अ लिक्विड फॉर्म, रॉट आयरन, पिग आयरन, जब वो सॉलिडिफाई होता है दैट बिकम्स सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को आप इजिली मोल्ड कर सकते हो। जो हम आयरन यूज करते हैं दैट इज नॉट दी सॉफ्ट आयरन। कास्ट आयरन, हार्ड आयरन के लिए दिस एरिया इज, तो उसकी रिटेंटिविटी भी हाई होनी चाहिए और कोर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए, सो दैट रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए ताकि वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रखे। कोर्सिविटी हाई क्यों होनी चाहिए, ताकि आसपास की कोई छोटी मोटी फील्ड उसको डीमैग्नेटाइज ना कर दे। तो परमानेंट मैग्नेट हार्ड आयरन या फिर स्टील के बनाए जाते हैं, दैट्स द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। सॉफ्ट आयरन इज यूज इन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन के अंदर, सॉफ्ट आयरन का एरिया छोटा सा होता है, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी बोथ इज स्मॉल। सॉफ्ट आयरन इज फिट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्योंकि उसको टेम्पररी मैग्नेट बनाना है। जब करंट पास करेंगे देन इट शुड हैव मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक इसको हटा देंगे करंट देन इट्स मैग्नेटिक फील्ड शुड बी गॉन। Correct. Soft iron is fit for electromagnet, is used for electromagnet, and steel or hard iron is used for permanent magnet. High coercivity and high retentivity for hard iron, permanent magnet. Low retentivity and low coercivity for electromagnet or soft iron. Hard iron is एल्निको also, जो जनरली हम यूज करते हैं लैब में फॉर मैग्नेट। वो किसका होता है, दैट इज नॉट दी आयरन, दैट इज एल्निको, एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट का एलॉय, जो लैब में यूज करते हैं। रेड कलर का कुछ पेंटेड होता है ऊपर मैग्नेट, दैट इज एल्निको। ओके, अंडरस्टूड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब एक दो और छोटे मोटे कुछ टर्म्स हैं, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस और दिस, तो इस पे हम एक आधा क्वेश्चन करेंगे दैट एनर्जी लॉस वाले पे। बिफोर दैट देयर आर फ्यू मोर टर्म्स लाइक सुपर कंडक्टर्स। क्या होते हैं, बोलो। टेम्परेचर लो करने पे, लो मतलब एक्सट्रीमली लो, क्लोज टू 0 केल्विन, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, राइट। क्यों 0 हो जाता है रेजिस्टेंस, हाँ हाँ हाँ,
कोलिजन खत्म हो जाता है मतलब मोशन ही खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो करंट कहाँ से आएगी? Are you getting the question? Superconductors are close to 0 Kelvin at such a low temperature. All the electrons are frozen. Frozen मतलब energy is very very less. करंट स्टैब्लिश करने पे करंट लॉस नहीं होती बिकॉज कोलिजन नहीं हो रहा है, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, मोशन होगा तो कोलिजन होगा ही। लो टेम्परेचर पे सॉलिड मेटल के अंदर कोई स्पेस थोड़ी बन गया। वो मेरा क्वेश्चन है। माय क्वेश्चन यू हैव टू थिंक, आई विल आंसर। 0 केल्विन के आसपास इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि वो मूव करे। मूव नहीं करते तो कोलाइड नहीं करते, कोलाइड नहीं करते तो इसलिए एनर्जी लॉस नहीं होती। बट फिर करंट कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग मैन। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्या? ओके, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। यस, देयर इज सम all superconductors exhibit perfect diamagnetism. परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म मतलब बाहर की जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देते हैं। इट्स कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। अंदर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े ऑसिलेट होते रहते हैं, उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करती है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बाहर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है, इट इंड्यूसेस अ करंट and that current is established. So that is not because of the electron motion. Superconductors है नहीं सिलेबस में अपने, by the way, just थोड़े से रिलेटेड है। मेसनर इफेक्ट क्या है? All superconductors exhibit perfect diamagnetism. Perfect मतलब बाहर कितनी भी फील्ड लगाओगे अंदर कोई भी फील्ड नहीं होगी, that field will always be zero. राइट? बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी जगह पे बस थोड़े थोड़े ऑसिलेट होते रहते हैं, दे प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के टाइम वेरिएशन से करंट इज स्टैब्लिश्ड। देखो मेसनर इफेक्ट, ऑल सुपरकंडक्टर्स एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब हुआ, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब हुआ mu r is -1. Mu r is 0, chi is -. Susceptibility is -1, so mu r is 0. All all superconductors behave as a perfect diamagnetism. Perfect diamagnetism का मतलब बाहर जो भी फील्ड लगी होगी अंदर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, that whole field will always be cancelled out. इसी को यूज करते हैं सुपर कंडक्टर्स में। बाकी सुपर कंडक्टर्स अपने मतलब का नहीं है, नॉट इन द सिलेबस। Diamagnetism is a universal property. Explain. Explain. Diamagnetism is a universal property. सारे एटम्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर्ड है तो सभी में डायमैग्नेटिज्म बिल्कुल होगा। पैरामैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत होगा जो ओवरकम कर लेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को। राइट, ठीक है। Now we'll do some 2-3 numericals based on this energy loss. Please write. A specimen of iron 12 kg. A specimen of iron of 12 kg loses energy when kept in an AC, loses energy when kept in AC supply of 50 hertz, AC supply of 50 hertz, if the area of hysteresis loop, if the area of hysteresis loop is 300 यूनिट, और वो यूनिट हमें डिसाइड करनी है। तो ये क्या था? हीट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट साइकिल।
पर साइकिल को लिखते हैं हर्ट्ज जैसे फ्रीक्वेंसी। Calculate the loss of energy in 1 hour if density of iron is, if the density of iron is 7500 kg per meter cube. Right. क्वेश्चन तो सिंपल सा है बट लैंग्वेज से एसोसिएट करना है। हिस्टैरिसीस लूप का एरिया रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट साइकिल। मास पता है, मास इज 12 kg। स्पेसिमेन जो हमने यूज किया उसका मास, सो वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। टोटल हीट लॉस इन टाइम t, heat loss per unit volume, suppose area of this is q, so heat loss per unit volume into volume। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी थी, इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी साइकिल होंगी? 50 हर्ट्ज मींस, सो ये पर साइकिल था मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ये 1 सेकंड में इनटू टोटल टाइम। यूनिटरी मेथड से बनाना है। पर यूनिट वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज हीट पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। एक सेकेंड में 50 साइकिल है और 1 आवर में 3600 सेकेंड। नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आप ऐसे भी सोच सकते हो। हीट लॉस पर यूनिट साइकिल इज 300, वॉल्यूम हमने यहां से निकाल लिया, दैट इज 12/7500। 1 सेकेंड में ऐसी 50 साइकिल होंगी और टोटल नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 आवर इज 3600। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया? नेक्स्ट, an iron rod of volume 10 to the power minus 4 meter cube। ये आंसर कैलकुलेट कर लेना मालूम, an iron rod of volume 10 to the power minus 4 meter cube and susceptibility 999 susceptibility 999 is placed in a solenoid, having 5 turns per centimeter winding, 5 turns per centimeter winding। आयरन रॉड है जिसका वॉल्यूम 10 to the power minus 4 meter cube, susceptibility is 999, is placed in a long solenoid having the number of turns per unit length 5 turns per centimeter, small n is 5 turns per centimeter, and
If a current of 0.5 ampere is passed in solenoid, calculate the magnetic moment developed in the rod. 0.5 ampere. If a current of 0.5 ampere is passed in the solenoid, calculate the magnetic moment developed in the rod. मतलब ये rod जो है वो कुछ magnet की तरह behave करेगा, उस magnet का magnetic dipole moment पता करना है. ओके मैं बताता हूँ कैसे करना है, डोंट वरी. गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, काई से निकालेंगे हम म्यू आर, दैट बिकम 1000. B is equal to mu naught H plus M. H तो पता पड़ गया कैसे, स्मॉल n पता है, I पता है. The magnetic intensity applied is Ni, और इससे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे M. M कैसे, B is equal to mu times H is equal to mu naught H plus M. Mu is for this material, which is mu naught times mu R. Mu naught gone, mu R हम निकाल चुके हैं. So mu R minus 1 times H is equal to M. M क्या है, net dipole moment divided by volume. This we have to calculate. Net field is mu naught into H plus M. Net field को लिखते हैं mu H, mu naught. Mu is mu naught into mu R. Mu R हमने calculate कर लिया, find the susceptibility. Questions easy है, ऐसा नहीं कुछ मुश्किल है, but our terminologies थोड़ी different है. V is volume is given, हमें net dipole moment निकालना है. Net dipole moment of this rod mu R minus 1 times H into V. Okay, I think most of the varieties, all of varieties questions we have done. Tangent galvanometer हमने कर ही लिया था last class में. Retentivity, coercivity, hysteresis loss, permanent magnet, electromagnet. अच्छा, one more thing is transformer core, but हम वो पढ़ेंगे इसी वाले chapter में, how the transformer core works. Oscillation magnetometer and deflection magnetometer also we have done. So now we are done with this chapter completely. जो भी doubts है वो आप पूछ सकते हैं. Next class Monday will start electromagnetic induction. Okay, any doubt you can ask, send in the group from any part. कितना हो गया तुम्हारा current? Still left 5 लेक्चर हो गए. स्किप करके क्या, स्पीड बढ़ा के. क्वेश्चन देखे ही नहीं या लिखे नहीं? वाला पार्ट जवाब भी सॉल्व कराए थे, वो स्किप कर दिया. Yes, any question please ask your doubts.
नहीं तो फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं. Don't have any doubt. What is aurora borealis? Can it be seen in India? CBSE. Aurora borealis क्या होता है? Sir, it's a light phenomenon. बोर्ड में क्वेश्चन है, can it be seen in India? No, sir. No, obviously not. Aurora borealis. बेटा इस चैप्टर की बात कर रहे हो. I is M. Intensity of magnetization or magnetization vector is same. That is denoted by I also and that is denoted by M also. नहीं है तो फिर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस करा देता हूँ. है पूछना तो कुछ भी पूछ सकते हो आप, अदरवाइज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तक की शायद वर्कशीट मैंने भेज दी थी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स. इसकी वर्कशीट भेजी थी आपको? नहीं. मैग्नेटिक मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज. राइट, चलो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो, a paramagnetic substance shows a net magnetization of 8 ampere per meter. तो ये क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके डाउट नहीं है तो हम ही क्वेश्चन कर रहे हैं इस टॉपिक से अच्छा. रिलेटेड. दो चार और थोड़े और टेढ़े मेढ़े टाइप वाले. अगर डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो. यू हैव 10-15 मिनट्स. पूछो, है अभी लानी पड़ेगी बुक. फोटो खींच के ग्रुप में भेज दिया करो या रख लिया करो. ये तुम अलग से ही पूछ लेना आपने जब आओगे कल. यस, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. मतलब अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उससे थोड़ा डिफरेंट है. अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस shows a net magnetization. Net magnetization is capital M, 8 ampere per meter. This is a paramagnetic substance. When placed in external magnetic field of 0.6 Tesla. 0.6 Tesla is the external field at a temperature of 4 Kelvin. 4 Kelvin temperature पे external field 0.6 Tesla लगाने पे magnetization is the magnetization is 8 ampere per meter. If this So when the external magnetic field is 0.2 Tesla and temperature is 16 Kelvin, find the magnetization. A paramagnetic sample shows a net magnetization of 8 ampere per meter when placed in external magnetic field of 0.6 Tesla at temperature 4 Kelvin. When the same sample is placed in external magnetic field of 0.2 Tesla and temperature of 16 Kelvin. Find the net magnetization. वो मैंने short form में लिख दिया है बोर्ड पे. You have to find the
क्या करेंगे? Intensity of magnetization is chi times h, and chi is inversely proportional to t. हाँ? ये कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा एंड सी आ जाएगा बी नॉट बाय म्यू नॉट, तो ये तो एनीवेज कांस्टेंट ही है. एम इज प्रोपोर्शनल टू बी नॉट बाय टी. मैग्नेटाइजेशन इज एम, या मैग्नेटाइजेशन लिखा हो या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखा हो, बात एक ही है. कैपिटल आई, देन कैलकुलेट द रेशियो. m dash by m is equal to न्यू डाइपोल, न्यू मैग्नेटाइजेशन निकालना है. m dash by m is b dash divided by b and temperature T dash divided by T. b dash is 0.2, b is 0.6, T dash is 16 and T is 4, is equal to m dash divided by 8. Simple. Magnetization is chi into h. Chi is inversely proportional to T and h is b by mu. So we get the ratio of m. Right? तो जो डाउट्स हो ग्रुप में एक बार पहले भेज दिया करो बिफोर द फ्राइडे क्लास. ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट कि बीच का टाइम वेस्ट ना हो. A magnetic needle is free to rotate in vertical plane about a horizontal axis passing through its center of mass and perpendicular to its length. Magnetic needle is free to rotate in vertical plane. Vertical plane में होता है BV. The place of experiment is Delhi. Magnetic needle is free to rotate in vertical plane about a horizontal axis passing through the center of mass. यहाँ से axis pass हो रही है and perpendicular to length. The place of experiment is Delhi. बताना क्या है? The needle remains horizontal when the axis of rotation is in the magnetic meridian plane. अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है तब तो एक BVBC में होगा, BHBC में होगा और BBC में होगा, तब तो ये इस तरफ टिल्ट हो जाएगी. So first option is wrong. The needle remains horizontal when the axis of rotation is perpendicular to magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन के अगर परपेंडिकुलर कोई हम प्लेन ले लेते हैं तो वहां पे BH तो नहीं होगा. BH cos 90 is 0. मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर इन दैट प्लेन देयर विल बी ओनली BV. सो उस प्लेन में वर्टिकल रहेगा. आंसर इज needle remains vertical when the axis of rotation is in the magnetic meridian plane. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, थर्ड तो गलत दिया हुआ है. If it is a magnetic meridian plane, then it will not remain vertical. It should be fourth. We can ask to challenge. मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन में हमेशा केवल एक ही कंपोनेंट बचा, कौन सा? BV. मैग्नेटिक मेरिडियन में तो BH और BV दोनों होंगे. And in the perpendicular plane will be BH cos 90 0. Only BV is left. Right? So next class will start electromagnetic induction. Then if there is any doubt, you can ask. Otherwise, we are done. तो संडे को टेस्ट भी है शायद कुछ. Yes sir, chapter 4. संडे है भाई, क्या बात कर रहे हो? पेपर बन क्या है मेरे पास? चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. जो सितंबर का पेपर है उसी में लिखा होगा. The BH curve for a ferromagnetic substance is shown. The ferromagnetic space inside a long solenoid. The current that will pass is demagnetized. यार n into I is 100. अभी तो पढ़ा दिया. Coercivity is small n into I, which is 100. Okay, that's it. Thank you. Thank you sir.